Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In today's newspaper discussion, we will discuss about the important topics from the newspaper of 9th October 2024. Today's topics are majorly regarding the religious freedom in India, if that is the key term to mention. Further, we will discuss about the relations between India and Uganda, also regarding the floriculture. What exactly is the uh, potential that this particular sector has, and also regarding the global digital compact. So, what exactly is it, and how can it benefit the digital innovations in India? तो फर्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग रिलीजियस फ्रीडम. तो ये USCIRF रिपोर्ट है. तो व्हाट डज इट से अबाउट इंडिया? तो USCIRF क्या है? यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. तो ये एक इंडिपेंडेंट बाय पार्टीशन यूएस फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि 1998 इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के अंडर बनाई गई थी. तो व्हाट इट डज इट मॉनिटर्स द यूनिवर्सल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ इन ऑल द कंट्रीज. अब कंसर्न क्या है यहाँ पर कि इंडिया को उन्होंने एक ऐसा टर्म दिया है कि इट हैज कोलैप्सिंग रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस. So we can think about what all are the reasons that this particular reason has been given here, and majorly discussing about the key articles in the beginning. Okay, what all are the articles that are important here? So Article 25, Article 26, 27, 28, they all talk about the religious freedom. जब हम की टर्म सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, which again is basic structure doctrine and it cannot be changed. तो further जो context है यहाँ पर, the challenges they can be regarding the hijab controversy. Further जो UCC debate चल रही है, the uniform civil code, CA से related protest हो रहे हैं, और जो anti conversion law amendments है और places of worship. तो इन सब के जो cases हैं, they can be the plausible reasons जिसकी वजह से this particular status has been given to India. Or country of particular concern or special watch list. These are the other designations that can be given here. So we can talk about the ways जिससे कि हम इस सबको और we can try to prevent such conditions जिनकी वजह से such status is being given. तो की टर्म्स यही सेक्युलरिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म, प्लूरलिज्म, टॉलरेंस की जो हम बात करते हैं. We can what Majidi, you're not audible. we can talk about here the different models of secularism which is there in okay, let me join from another device. Prerna, continue. Further, the next topic is regarding the textile industry and why is it struggling to perform better. So currently status क्या है? जो India's textile का size है and the apparel industry, it was estimated to be $153 billion in 2021, and in financial year 2022, India was the third largest textile exporter globally, enjoying a 5.4% share. और within India जब हम बात करते हैं, तो Tamil Nadu is the state which has the largest spinning capacity in the country. तो जो ये exports हैं, they slump. And high raw material prices होगी इसकी वजह से of both the cotton and the man-made fibers. आपके नेट प्रेरणा
So imposition of a 10% import duty as well on cotton, which has made the Indian cotton more expensive as compared to the international prices. तो मेजर हम बात कर सकते हैं कि फर्दर कैसे हम बेटर कर सकते हैं प्रोडक्टिविटी को. तो अगेन टेक्नोलॉजी एंड स्किलिंग ऑफ द वर्कफोर्स एंड दैट मस्ट आल्सो बी रिलेटेड और मे बी appropriate to the Indian conditions, keeping in mind the actual quantity of the uh, demographic dividend that is currently present, so that they don't replace the labor. और कुछ स्पेसिफिक अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं तो जूट इंडस्ट्री ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर सेक्टर है इंडिया का, और लार्जेस्ट क्या है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. फर्दर वी टॉक अबाउट द सिल्क इंडस्ट्री जिसमें इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क. तो इसमें हम बात कर सकते हैं रिगार्डिंग द टेक्सटाइल पार्क्स, टेक्सटाइल क्लस्टर्स, इंडस्ट्रियल हब्स, हाउ कैन दे हेल्प इन enhancing the production. So first of all, what are the important challenges directly mentioned? Geopolitical development, for example, uh, recently coup even in Bangladesh. Second would be competition from rising developing countries such as Vietnam, others with regarding to the man-made fibers. Third would be labor cost in India. It is not much more productivity. And fourth would be electricity cost, as well as there is a challenge with regarding to the competition from the न्यू राइस न्यू सेक्टर. फॉर एग्जांपल अभी बोल सकते हैं फास्ट फैशन हो गया, जो हो सकता है कि जो अपने ट्रेडिशनल सोर्सेज है दे आर नॉट एबल टू अकोमोडेट सच काइंड ऑफ अ विजन. तो लॉन्गर टर्म में टेक्सटाइल पार्क, पीएम मित्रा, even focusing on ESG sustainability across the supply chain will make the textile sector more accessible to the consumer. तो टेक्सटाइल सिर्फ और सिर्फ पहनने के लिए यूज नहीं होता है. टेक्सटाइल कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस, फॉर एग्जांपल रोड मेकिंग, उसके के लिए भी टेक्सटाइल है. इवन टेक्सटाइल इज यूज फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड फिर टेक्सटाइल को यूज कर सकते हैं फॉर द टेक्निकल टेक्सटाइल पर्पसेस, फॉर एग्जांपल फायर फाइटिंग हो गया या फिर एथलीट हो गया. तो Also, we can say that textile should be one of the major focus areas when we are going ahead with the free trade agreements. Like Vietnam and Bangladesh, they particularly focus upon this. next For the global digital compact, so with the rising need of digital uh, intelligence, we can discuss about the importance of the associated challenges with them, be it regarding the ethics or regarding the data privacy. These are all the associated concerns. A potential of digital technologies उसको उसको exploit करना, that also becomes crucial here. तो ये GDC है क्या? It is not a binding law, लेकिन एक diplomatic instrument है with a set of shared goals of governments, institutions, firms, and other stakeholders to bear in mind. So safe, orderly, and regular migration के लिए it exists currently. So digital public goods, it proposes digital public goods that will include the open source software, open data, open AI models, plus adherence to the privacy and best practices. So it can be a way so as to foster innovation, data governance. जैसे normally we talk about the regulatory sandboxes, जो again innovation को भी and जो data privacy है उसको भी they take care of. These are the associated areas. तो साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी, डिजिटल इंक्लूजन, उसमें भी इट कैन हेल्प. जो डिजिटल डिवाइड है, be it with regard to gender or with regard to the economic background of the individual, it can help in overcoming that. नहीं और भी है इसमें, फॉर एग्जाम्पल करो.
तो GDC, तो इस पे बात किया जा रहा है कि GDC ग्लोबल डेटा कॉम्पैक्ट हो गया, नॉन बाइंडिंग है विद रिगार्डिंग टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जांपल EU का AI एक्ट हो गया। तो EU क्या है वो, व्हाट अबाउट UN? और फिर कल ऐसा कुछ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है विच directly addresses the new rising challenges in the AI revolution or even in technological revolution with regard to data privacy and jurisdiction needs etc. तो कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है विद रिगार्डिंग टू द डिजिटल टेक्नोलॉजी इट्स नीड्स टू बी फ्रॉम द UN, क्योंकि UN इट इज द मोस्ट important institution with regard to multilateral institution that is, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ ऐसे IPC है क्लाइमेट चेंज के लिए, वैसे ही कुछ डेटा के लिए है ऐसा। तो शिकागो तो दूसरा हो गया, विद रिगार्डिंग टू द बेस्ले कन्वेंशन हो गया, या फिर और भी कुछ अग्रीमेंट है, लेकिन वो डेटा से रिलेटेड नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीज के साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, कोई AI से रिलेटेड है, डेटा। Also, we can say कि when we talk about its lacuna, कि how suitable it is to the developing countries, that can be one question. Second, here we are questioning the openness when we're talking about its openness. So openness is restricted by contractual requirements like non-disclosure, then confidentiality and protection of intellectual property. So we can say that it is more skewed towards the Western interest, and it is adding little to existing framework of the existing governance. So it is also talking about that there should be self-regulation of the big tech or the digital tech companies. So what additional or new it is adding, and plus it is also equitable in nature. नेक्स्ट For the floriculture बोलो। blossoms in one of the backward regions of Odisha. तो इसमें ये ग्रास रूट लेवल इनिशिएटिव है currently. So it is for being home to one of the first farmer producer organization in the state, जो कि डेडिकेटेड है एक्सक्लूसिवली टू फ्लावर कल्टीवेशन। तो जब हम बात करते हैं एक्सपैंडिंग द एरिया विद रिगार्ड टू एग्रीकल्चर, या जब हम कल्टीवेशन की बात करते हैं, तो उसमें इवन वी टॉक अबाउट हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर, कैसे इनमें देयर इज अ लॉट मोर स्कोप प्रेजेंट इवन विद रिगार्ड टू एग्रोफोरेस्ट्री एक्सेट्रा। तो इन सब एरियाज में एक्सपैंड करना इज क्रूशियल। तो ये लखनऊ बेस्ड CSI या फ्लोरिकल्चर को क्यों प्रमोट करें? तो फ्लोरिकल्चर इसलिए प्रमोट कर सकते हैं क्योंकि वी आर मच मोर डिपेंडेंट ऑन फूड क्रॉप एज वेल एज अदर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी क्रॉप एक्सेट्रा। बट जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जांपल फ्लोरिकल्चर हो गया, उसके अंदर फॉर सैफरन हो गया जो हॉर्टिकल्चर में आता है, इवन मैंगो हो गया वो भी हॉर्टिकल्चर में आता है, सब चीज हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं वो रेन्यूमरेशन ज्यादा पे करे। फर्दर फ्लोरिकल्चर के द्वारा आप जो हनी बीज कंजर्वेशन वो भी पूरा कर सकते हैं, वो भी कनेक्टेड है। फार्मर्स कैन also include floriculture in a traditional practices so that they can earn more profit from it, क्योंकि फ्लोरिकल्चर के लिए वो कम चाहिए जगह एज कम्पेयर टू वीट राइस एक्सेट्रा। दैट इज बाई CSI यार, नेशनल बॉटनी रिसर्च, वो बात करते हैं हाउ द फार्मर्स कैन मेक अ वेरी गुड इनपुट विद रिगार्डिंग टू द एडिशन ऑफ द फ्लोरिकल्चर इन इट्स ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस ऑफ फार्मिंग। तो एक एग्जांपल जुजू वाला फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का। तो टूरिज्म में भी ये हेल्प कर सकता है बूस्ट करने में, ऑर्नामेंटल एग्जांपल जैसे अगर प्लांट। बोला जाए तो वैलीज ऑफ फ्लावर हाँ। उत्तराखंड के अंदर हो गए, ट्यूलिप गार्डन हो गए फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर के अंदर में। So we are seeing the local level पे how this ecosystem is being created with the help of technology. Like they created a WhatsApp group where all the real-time updates they are being shared regarding the market trends and demand for specific flower species, so that they can decide that which one would they be going forward with. So it is motivating more farmers to get involved, and also post-COVID, we have seen that the share of labor force or the people working has increased in the agriculture sector to 47%, which was declining
in pre-COVID times. So it is creating to the additional pressure of disguised unemployment. So that is why it is also important that we need that pre-COVID trend to continue further with more structural shift towards the industrial sector and to the non-farm activities apart from the agriculture, like when you're talking about the allied sectors. So floriculture or the horticulture sector is one of them. एंड फर्दर इसमें एग्री एंटरप्रेन्योरशिप की भी बात कर सकते हैं, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट्स के लिए तो इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिशियल. और इंडिया की बात करें तो कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लावर्स. नेक्स्ट, फर्दर सनसेट फॉर द यूके's coal fired पार्ट. जब हम बात करते हैं विद रिगार्ड टू फेजिंग डाउन एंड फेजिंग it is not showing. Further, when we discuss about the phasing down and When we phasing are discussing regarding a UK coal fired plant, the problem with regarding to Britain is Britain has been one of the greatest exporter, the largest exporter of coal from 20th century. But slowly it has changed, it has transformed from coal-based power plant to more renewable source of energy. For example, London में Great Smoke आया था 1952 में. Even after that, Clean Air Act आया इंडिया, वहां पर आया इंडिया में 1981 में एयर एक्ट. Similarly, slowly there was a rise of political awareness among the people and civil society. They were making the government accountable to the needs of the environmental conservation and as well mitigation of climate change. तो वो बात करना चाह रहे थे कि लॉन्ग टर्म में यूके विल reduce the coal emission, coal-based carbon emission, and it will just it will focus on transitioning to the renewable source of energy. लेकिन India can learn from Britain, but India can not use the same model of Britain because Britain is a developed country. And second, it is a historical polluter, whereas India वहां पर per capita आज भी कम है. We need energy so that इसलिए हम लोग 2021 में COP26 में हम लोग बोले कि we are focusing on phasing down rather than phasing out. Then इंडिया का जो फर्स्ट कोल माइन रानीगंज, वेस्ट बंगाल, धनबाद, झरिया, इस तरफ में इट इज फोकसिंग मच मोर ऑन क्लीन कोल. तो हम लोग फोकस कर रहे हैं क्लीन कोल पर. सेकंड, वी आर फोकसिंग मच मोर ऑन कोल गैसिफिकेशन सो दैट द कार्बन एमिशन कैन बी रिड्यूस. न्यू कोल पावर प्लांट तब भी बना रहे हैं, आज ही बना रहे हैं, क्योंकि वी नीड एनर्जी फॉर आवर एनर्जी सिक्योरिटी फॉर होल. फॉर एग्जाम्पल सौभाग्य स्कीम के अंदर में इलेक्ट्रिक स्टोव और इवन एलपीजी हो गया. लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिक स्टोव का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? कोल से आएगा स्टार्टिंग के लिए. बस एमिशन कम करना है तो वी आर फोकसिंग मच मोर ऑन अदर सोर्सेज. नेचुरल गैस हो गया, इवन कोल गैसिफिकेशन हो गया, मीथेन जो सबस्ट्रेट होता है उससे बात हो रहा है. तो ये ट्रांजिशन होगा इंडिया के केस में. इट वुड बी मोर जस्ट, इट विल मोर इंक्लूसिव एज कम्पेयर टू ब्रिटेन. So a vote is like a rifle. Its usefulness depends upon the character of the user. Theodore Roosevelt. You can add on. India's screen is lagging. It is still not visible on my screen. The vote is like a rifle. Its usefulness depends upon the character of the user. That is true. कि जो voting है, it can be, for example, the rise of Hitler in Germany. जो जर्मनी में जो नाजी जर्मनी हुआ, it was not on the basis of only threat, use of violence, but it was also used through the voting machine. वहाँ 23-25% लोग वोट दिए ही थे. तो कहने कि उनका जो विजन था, it was supporting the vision of the German or under the Hitler. वो दिखाता है. Similarly, जब इंडिया में होता है तो इंडिया में the voting system was made more inclusive. All section of the society, even women, were included under the universal adult franchise.
अनलाइक डेवलप कंट्री सच एज यूएस जिसमें 1960s में मिला ब्लैक को वोटिंग, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में जो परसेंटेज है वोटिंग करने का, वो कोई लोग वोटिंग फ्रीबीज के लिए करते हैं, कोई उनको लगता है कि कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए वोट करते हैं, तो इट डिपेंड्स हाउ द यूजर इज टेकिंग द पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया और वाइस वर्सा इन द वर्ल्ड। Also इसलिए हम लोग from बात the करते हैं perspective कि of global trend, also like we are seeing recently rise of far right in different countries. Like Germany may we see rise of Scholz Olaf, or in Germany it is Giorgio Meloni. In Italy, sorry. So that is also indicating, again, it is the voters who are deciding, as it is stated here. It depends upon the character of the user. नेक्स्ट, with regarding to India Uganda relationship, तो Uganda is in Africa, so we can derive, if Uganda is Africa, India is increasing its presence through trade investment. The first relationship would be in the agriculture area sector. For example, यहाँ largest opportunity agriculture में, true. इसमें कॉफी, टी, शुगर, लाइफ स्टॉक, फिशरी सब रहेगा. फिर बियॉन्ड एग्रीकल्चर जब जाएंगे तो कमर्शलाइजेशन फोकस किया जाएगा, सीड, पेस्ट कंट्रोल, एग्रीकल्चर सर्विस पर, टूरिज्म पर फोकस किया जाएगा, देन माइनिंग एंड ऑयल गैस, साइंस एंड टेक. और इंडिया का जो इंडिया स्टैक हो गया, इंडिया हैव इज अ लीडर इन डिजिटल रिवॉल्यूशन, वो हेल्प करेंगे. प्लस युगांडा इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री इन अफ्रीकन रीजन, तो उसके साथ इंडिया विल मोर एंड मोर कोलैबोरेट on wide ranging issues such as debt trap mechanism, climate change, conflict, trade wars, non-alignment movement. So as more further, India and Uganda will share several key aspect in culture sensitivity. इसके लिए दोनों के बीच में कोलैबोरेशन होगा हर एक एस्पेक्ट में, सिस्टर सिटीज टाइप प्रोग्राम किया जाएगा. Journey of expanding ties. India and Uganda has been increasing its export and import from small agriculture product to more and more technological based, the paper boards, vehicles, etc. तो लेकिन जब सिर्फ 36 मिलियन ही है एक्सपोर्ट फिगर और इंपोर्ट 17 मिलियन है, बहुत स्कोप है आने वाले देश में. टूरिस्ट पार्क हो सकता है, bilateral engagement with both the countries, culture ties and tourism through the use of vibrant Indian diaspora, PIO and NRIs that have invested $1 billion in Uganda. High Commission और ICCR, Indian Council of Culture Relation, वो कैसे हेल्प करते हैं to improve the relationship between the two countries through the use of diaspora. Indian artist कैसे हेल्प कर सकते हैं दोनों के बीच में डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करने के लिए, दोनों के ट्राइबल्स जो सिस्टम है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, म्यूजिक साइन कर सकते हैं, हाउ टू कंजर्व एंड प्रिजर्व ट्राइबल्स. कलनरी हो गया, गैस्ट्रोनॉमी हो गया. युगांडा में माउंटेन गोरिल्ला मिलता है, इंडिया में कोई भी एप एनिमल नहीं मिलता है. फ्रॉम द पीटी परस्पेक्टिव इंडिया में सिर्फ एक ही मिलता है, वो गोल्डन हिलॉक हो गया. उसके अलावा कोई भी एप नहीं है इंडिया में, ओरंगुटान नहीं है, गोरिल्ला नहीं है, तो वहां पैसे मिलते हैं, तो एक तरह टूरिज्म हो सकता है. वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टॉम्स ऑफ बुगांडा, किंग ऑफ कासीब. नेक्स्ट,
For the caste rules and jail manual. So when we talk about the prisoners, so इसमें recently there was the concern regarding the caste-based discriminations that were made. तो इसके regarding जो prison manuals है उनमें जो reforms है they are required here. और जो मेजर की टर्म्स है वी कैन टॉक अबाउट द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ ग्रुप या फिर जब हम बात करते हैं पॉवर्टी की और रोल ऑफ एनजीओ कैसे इसमें टेक प्लेस कर सकता है जैसे प्रयास ये एक एनजीओ है विच इज स्पेशली फॉर द प्रिजनर्स अदर इश्यूज दैट वी डिस्कस अबाउट रिगार्डिंग द प्रिजनर्स सो दैट इज रिगार्डिंग देयर रिफॉर्मेशन या फिर देयर रिहैबिलिटेशन कैसे दैट कैन टेक प्लेस तो रिस्टोरेटिव और रेट्रीब्यूटिव जस्टिस जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं इश्यूज क्या क्या है मेजरली प्रिजन्स में तो दे आर रिगार्डिंग ओवर क्राउडिंग अंडर ट्रायल्स है और लैक ऑफ हेल्थ केयर है एंड ऑल्सो जो कस्टोडियल वायलेंस है दैट ऑल्सो एग्जिस्ट और फर्दर नेल्सन मंडेला रूल्स है स्पेसिफिकली फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिजनर्स तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक स्ट्रक डाउन कर दिया बंच ऑफ रूल्स इन सेवरल स्टेट प्रिजन मैन्युअल्स उन्होंने कहा कि दे रीइंफोर्स द कास्ट डिफरेंसेस एंड टारगेट द मेंबर्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज तो मॉडल प्रिजन मैन्युअल 2016 and the draft model prisons and correctional services act 2023 So right to equality, Article 14, फिर right against discrimination, Article 15, abolition of untouchability, Article 17. These are the important rights here. इसमें Nobel recognizes scientists whose work laid foundation of AI revolution. Their research enabled pattern recognition computer, key component tools like facial recognition and image improvement. तो artificial intelligence this year Nobel Prize for Physics has recognized two scientists who laid the foundation of AI revolution. ये neural network हो गया. It comprises of interconnected artificial neuron divided into inner layers and outer layers और कैसे process करते हैं. It mimics the brain. Continuous processing of with the use of data set इसलिए उसको deep learning बोलते हैं. It is heart of modern speech and image recognition, self-driving car, voice assistant. चाहे जीपीटी से लेकर हर जगह इसको यूज किया जाता है इवन इन सिक्योरिटी फोर्सेस एक्सेट्रा तो हम बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तो सिंस बिगिनिंग इटसेल्फ वी हैव बीन टुवर्ड्स द नॉन अलाइनमेंट सिंस इंडिपेंडेंस इटसेल्फ और ऑल्दो जैसे जब हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की तो ही काइंड ऑफ हैड अ सोशलिस्ट इंक्लिनेशन जैसे जब हम यूएसएसआर की बात करते हैं बट ग्रेजुअली ड्यू टू द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर तो उसकी वजह से बिटवीन द टू मेजर ग्लोबल पार्ट्स उसको प्रिवेंट करने के लिए भी सो एज टू नॉट फ्यूल इट वी स्टिक टू दिस पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट जस्ट लाइक मेनी अदर कंट्रीज इन्हीं के साथ साथ फॉरेन पॉलिसी में हम बात करते हैं रिगार्डिंग द नॉन कोलोनाइजेशन एंड द सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड द नॉन अपार्थाइड तो ये सब भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के प्रिंसिपल्स हैं अब इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये चेंज हमें देखने को मिलता है इंडिया शिफ्ट ऑन पैलेस्टीन के दिस इज मेजरली फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम द वैल्यू बेस्ड टू द ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी तो ये मेजरली फोकस कर रहा है ऑन द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स कि कैसे जो इकोनॉमी को स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट है
उनको अब ज्यादा ऊपर रखता है इंडिया एज कंपेयर टू द शेयर्ड हिस्ट्री या फिर जो हम हिस्टोरिकल बेस्ड फॉरेन पॉलिसीज के प्रिंसिपल्स की बात करें. ट्रू. इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट है इट इज फोकसिंग मच मोर ऑन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी टू मल्टी अलाइनमेंट. कि आप पैलेस्टीन को सपोर्ट करेंगे बिकॉज इंडिया हैज वोटेड अगेंस्ट इजराइल एंड फॉर पैलेस्टीनियन स्टेटहुड इन यूएन 2024 में. तो ये दिखाता नहीं है कि इंडिया हैव नॉट बीन सपोर्टिंग पैलेस्टीन राइट नाउ. India is focusing much more on realism in achieving national interest, because with regard to Israel, India has a long-term strategic interest in Middle East as well as sharing of cyber, even intelligence, technology, etc. तो पैलेस्टीन जो है it is very sensitive issue which India deals with it and moral duty भी है. लेकिन at the same time India cannot afford to lose its strategic interest by all time supporting Palestine. That is why India is moving from deep rooted जो था सिस्टम की आइडियोलॉजी का फाउंडेशन था कि हम लोग को फोकस करना है डीकोलोनाइजेशन पर, वो भी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो इंटरेस्ट है वो फॉलो करना है. Further, to accommodate startups, MITI relaxes AI compute procurement norms. So the Ministry of Electronics and Information Technology, it has relaxed some provisions in its norms to procure the computing capacity for artificial intelligence. So apart from this, when we talk about the major initiatives by the government which are helping to enhance the compliance for the startups, be it regard to the registration, जो उसमें जो norms का ease हुआ है with regard to DPIIT, and हम बात करते हैं about the Bhaskar scheme that was recently introduced, that was also regarding the startups itself. So कैसे the enhancement in such compliance and the procurement norms, it can help in integration with regard to AI as well. This is regarding the trend कि कैसे white collar checks, they indicate a significant increase in discrepancies. So 44% rise in employment verification discrepancies has been seen across 6 key sectors. So, Oshibia, imagine if you can add on the inference from this. इसमें लिखा है मेजर वाइट कॉलर चेक्स इंडिकेट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिस्क्रिपेंसीज, वेरिफिकेशन, ग्रोइंग आइडेंटिटी फ्रॉड, ट्रांजिशन टू डिजिटल वेरिफिकेशन फोकस कर रहे हैं हम लोग. क्योंकि जो वाइट कलर जॉब है मोस्टली इट इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज में, इसलिए Mostly we see that white collar jobs or the workers are mainly engaged in like managerial or administrative tasks. For example, when you talk about accountants, CAs, lawyers, and managers. So Indian regulators doing world-class job. Finance Minister. So she put up a strong defense of India's financial sector regulators. तो रेगुलेशन में अगेन सेबी की हम बात कर सकते हैं. We are talking about here Indian regulators doing world-class job. For example, it is stated the key phrase that balance between over and under lending creates best banks.
So balance between these two is very important. Of late, we were talking about this concern that we are seeing falling bank deposits, which will be creating pressure to uh, lend credit, or when we talk about the money multiplier in the economy. And overlending would be, again, that would lead to higher risks and the vulnerabilities for the banks in terms of the non-performing assets or overlending, as we saw that RBI came to the rescue when it stated, when it was clearly monitoring this trend, that the non-collateralized loans, they were increasing. So it came and stated that when it comes to regulation, for example, you need to maintain the credit risk weighted assets ratio at 125% for the banks. So that is how we can say it is balancing, because of it we are also seeing the massive growth of like NBFCs or the fintech companies at the same time. The chances of financial frauds is increasing. So again, RBI releases certain advertisements for the awareness of the consumers also. So this is from the perspective of RBI. From the perspective of SEBI, we have been seeing that firstly insider trading norms. So that is one area. Second is recently SEBI has introduced 5 to 6 new changes, which will be further protecting the interest of the investors, particularly the retail investors, because of increased participation in the derivatives market, which is dealing in futures and options. So we are seeing that there is greater transparency into the system, and with the world class standards that we're following, because of, again, we can say that it is Basel norms 3 that we have implemented, and that has worked for India as well. So for example, we have the National Bank for financing infrastructure and development, or when it comes to even the IBC, that is one of the more major structural reforms that we can talk about, and ARCs. And Like Basel law recent for the कैपिटल एडिक्वेसी को मेंटेन करना, एक परसेंटेज होता है उसमें, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 8 या 9% इज द करंट, 12. Yes, but India still maintains it at above 3% of 8 to 9%. As a buffer, capital conservation buffer is what we call it as. So non-food credit has increased again with 1 billion bank accounts, 1 billion mobiles, and billion digital identities. So development can truly be democratized when we talk about this Trinity also. And of late, RBI has also introduced the unified lending interface when we're talking about the JAM Trinity, UPI, and another new thing that is added is ULI for seamless credit availability.